Namaskar. Hello friends. Today we are going to paint a pouch in Warli art style. So let's start. This is a canvas pouch. This is the black paint which I am going to use. Consistency should be liquid, not very thick. And this is my 000 number brush. See, the brush should be soaked only this much. No need to soak it till here or anything. Okay, now I have drawn the design, very simple border as you all can see. Draw a freehand line, but try to start it from the end because sometimes too much color comes out. So if we start from the end, it's better. I'm using the fabric paint. This is canvas, so it will absorb lots of paint. So we may have to give a second coat afterwards. Just like we are writing on the paper, we will keep on drawing. If you want to make thin lines, keep your brush vertical. If you want to fill the color, keep your brush horizontal. See the brush? Now it is horizontal. When I have to fill the color, I keep the brush this way. When I have to draw a line, I will keep the brush this way. This is the pot. We can draw some design on the pot. And this is the fire.
आपका पेंट बहुत थिक नहीं होना चाहिए। अगर बहुत थिक पेंट होगा तो कपड़े पे करने में आपको तकलीफ होगी, और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। बहुत पतला होगा तो कपड़े पे या कैनवस पे वो फैल जाएगा, और बीच बीच में हमको ब्रश को पोंछना पड़ता है। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पेंट जमा हो जाता है उसको निकाल लेते हैं। और ये 000 नंबर का ब्रश है जो मैं यूज कर रही हूँ। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पत्तियों की धारियां अगर हम नीचे ला रहे हैं तो सारी पत्तियों में हम नीचे ही लाएं, और अगर हम ऊपर ला रहे हैं तो सब में हम ऊपर ही ले जाएं। एक पैटर्न फॉलो करेंगे। आप डॉट्स बनाने के लिए ये डॉटिंग टूल्स भी यूज कर सकते हैं। इनसे डॉट्स बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत परफेक्शन से बन जाते हैं। और बड़े डॉट बनाने के लिए आप ब्रश का पीछे का हिस्सा यूज कर सकते हैं। उसको पेंट में डुबो के बहुत अच्छे डॉट्स बन जाते हैं।
Thank you friends for watching my tutorial. I hope you like it. Kindly like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.